हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और यू बी एफ एच वन एच टू कैसे कभी नेगेटिव या फिर कैसे कभी पॉजिटिव होता है। रियल इमेज में कैसे यू बी एफ पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, वर्चुअल में कैसे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेंगे, ये पढ़ेंगे। मेनली मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। पहला फॉर्मूला है 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू -d/u और दूसरा फॉर्मूला होता है h2/h1। इस तरह से मैग्निफिकेशन को डिफाइन भी किया जा सकता है। वी कैन डिफाइन मैग्निफिकेशन एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ UVF is positive or negative in respect of concave mirror. Like concave mirror, we draw concave mirror like this. If we complete the circle will be formed like this. Obviously the center of the circle will be on the left side of the mirror, so we can now remember that जिधर सेंटर होगा उधर ही फोकल लेंथ होगा। सो द कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है इसलिए नेगेटिव लिया जाता है। एनीथिंग विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव और इसलिए फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का नेगेटिव लिया जाता है। U will always be negative. Why it is so? Because in every way diagram we have put the object toward the left side of the object in case of either concave mirror or convex mirror. So U will always be negative. H1 will always be positive. Why it is so? Because the object is put upward of the principal axis. Anything which is upward of the principal axis is taken as positive. Now we will discuss how V and H2 is positive or negative. Real image is formed toward the left side of the mirror, so image distance will be negative. Real image is always inverted. Real image is always inverted, so H2 will be negative. Because real image is always inverted. Anything which is downward of the principal axis will be taken as negative. M will always be for the real image will always be negative. Why it is so? Because the formula of M magnification is h2/h1. h2 is negative and h1 is positive. So the answer will always be negative. But as far as virtual image is concerned, virtual image is formed toward the right side of the mirror, so image distance, that is V, will be positive. Because anything which is right side of the pole of the mirror will be taken as positive. H2 will be positive. Why? Because the virtual image is always erect and magnification for the virtual image is always positive. Why it is so? Because H2 is positive and H1 is positive, so the answer will always be positive. We will discuss all these things with respect to now convex mirror. If we draw the convex mirror,
convex mirror is normally drawn like this. So we complete the circle. Obviously the center will be toward the right side of the mirror. So the focal length of the convex mirror will be taken as positive. Object will always be negative because the object is always toward the left side of the mirror, and V will be positive. Why this so? We know that the convex mirror always forms virtual image, and virtual image is formed toward the right side of the mirror. H1 is positive. We have already discussed why this so, and H2 will always be positive in case of convex mirror. Why it is so? Because convex mirror always forms virtual image, and virtual image are always negative, and मैग्निफिकेशन will be positive. वैसे भी ये याद रखना है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। एक आध बातें मेरे सम डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहे कि मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज 3। जैसे हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा कि मैग्निफिकेशन 3 है, और सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। वैसे ही हम क्वेश्चन के सॉल्व करते समय गिवन में लिख लेंगे m इक्वल्स टू -3। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 centimeter is placed 10 centimeter in front of mirror। जैसे हमने ये चीज पढ़ा, हमें ये देखना पड़ेगा ये 2 centimeter, what is the 2 centimeter? This is the size of the object, so we will write like h1 equals to 2 centimeter। और ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है फ्रंट में, वैसे ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में ही प्लेस होता है। कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो u ले लेंगे -10 सेंटीमीटर। वैसे भी याद रखना है, जब भी फ्रंट गिवन, फ्रंट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर। सो जब भी फ्रंट वर्ड गिवन हो तो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। जब भी बिहाइंड वर्ड गिवन हो, that thing will be taken as positive. We will discuss different kind of sums in the next video. Thanks.